Hello and welcome to everyone. We welcome you once again to Vestralex free online community classes on law. This is your initiative by you, for you, and possible only through the generous contribution of our seniors, guides, and mentors. Today, we have the honor and privilege of learning from Mr. S.B. Shaily, sir. We'll be learning about labor laws, and I request Mr. Dhananjay Gupta to kindly introduce, sir. Thank you, Mr. Keshav, for giving me this opportunity to introduce Mr. Shaily sir here. Today, we have among us is Mr. S.B. Shaily, advocate, has been a registered practitioner of law since 1998, a graduate in BA LLB with a diploma in labor laws. He primarily practices in the Central District Courts of Delhi, including Tisari and Brown Avenue Courts. His expertise lies in civil laws and labor matters and has extensively practiced in these domains at various forums. He has also been on the labor law panel at the DLSA and has contributed significantly as a legal aid counsel with the Delhi State Legal Service Authority, espousing the cause of those in need from various strata of society. He is an eager learner of law and chooses to liberally guide and assist his peers advocates. Now I hand over this class to sir for taking out this time for guide us. Please, sir, I hand over the class to you, sir. Sir, thanks. Good evening to all listeners or to all my colleagues or brothers. I am S.B. Shaily. I have some little bit experience in the labor laws, so that I can share with you. So you just tell me from where I have to start, because it is a very big, you can say very big umbrella where the lot of labor laws are enacted. Sir. So sir, if you may suggest me from where I have to start, because there are a lot of I have to discuss. Then firstly, division of the labor laws, that if we say that labor law, then what all laws are included in labor laws, like Industrial Disputes Act, Factories Act, Wages Act, Minimum Wages Act. So what all acts come together to become a complete labor law code, sir? So now, first of all, I just start with the Labor Industrial Dispute Act. See, the Industrial Dispute has been passed by the government in 1947. Actually, it is an enactment to resolve the disputes between the workman and the employer. So there are a lot of different kinds of disputes are resolved or raised between the parties. So I just, in brief, I say that in industrial dispute, there is two kind of the disputes. One is the collective bargaining, and second is the individual disputes. So collective bargaining, the disputes or the causes which are covered in the collective bargaining are governed by the section 2K of the industrial dispute, whereas the disputes which are individual disputes with regard to the termination and dismissal, etc., that are specifically covered by the section 2K of the Industrial Dispute Act. This is the main, you can say, main relief we can seek from this act. Right now, what is the industrial dispute? What is the collective bargaining? Generally, the collective bargaining is a dispute where the terms of employment is disputed, or any differences arose between the employees and the management with regard to their terms and conditions. Now, what is the terms and conditions? Suppose a person is employed and the employer does not pay bonus to all the workmen, or the employer has included some of the workmen are secluded from yours, or some of the workmen are covered under this bonus act. So if there is any discrimination among the workmen, so the persons who is aggrieved by the judgment, by the decision of the court, by the decision of the employer, they can seek any remedies from this section. So this is called a collective bargaining disputes. In this kind of disputes, generally the individual person cannot seek any remedies unless it has been
espoused by the some group of employees of that particular establishment or a registered trade union. So any relief person wants to take from this from the from under this section, he has to take the assistance of the trade union or a group of employees who are in the dealing in the public, or you can say who are dealing in the who are dealing or who are raising the causes or who are dealing the causes of the work, like an association or a group of employees. So this is the difference between this is the main, you can say this is the relief a person can seek from the employer under section 2K of the industrial code. Generally, there are a lot of cases are covered under this. Lot of cases in the sense, lot of causes are covered under this, like pensions, regularization, or those cases which are not covered under the Schedule 2, Schedule 3 and 4. All the cases are covered under the industrial dispute, under section 2K of the industrial dispute. Likewise, suppose a person who has been terminated illegally or dismissed, he can seek any remedy from the as an individual dispute from the section 2K to 2A of the industrial dispute. This is the difference between the collective bargaining dispute and the individual dispute. There are a lot of other remedies are also available. Suppose a employer has changed the service condition of an employee. In that eventuality, a group of persons who has been aggrieved by the change of service conditions, that can also go to for the collective bargaining. Likewise, suppose a person who has to seek some monetary benefits from the employer, he can also seek a benefit from suppose he can seek that benefit from this section also. Suppose a person is aggrieved. Suppose a person is getting a basis less than minimum wages or a minimum wages, but some other employees are getting wages more than minimum wages, or there is a difference between the wages between one category or one. So then when there is a discrimination with regard to their wages, that is also called the collective bargaining dispute. So he can also approach to the court under section 2K of the industrial dispute. So these are the main things which we can take, or which we can take benefits of this section. Thereafter, the other sections also, like section 9A. 9A is the change of service condition. A person is aggrieved by any suppose a person is transferred from one place to other, or a group of employees has been transferred from Delhi to Bombay without any service condition, without any their letter of appointments. In that eventuality, this is also a cause of which is specifically covered by the section 2K of the industrial dispute. So this is the dispute. There is a difference between the individual dispute and the collective bargaining. Simple. Thereafter, in the industrial, major thing is that that is a 11A. Suppose a person has been aggrieved by the wrongful dismissal, and he approached the court. Generally the court passes an award. In that eventuality, if the court is trying a dispute where the matter is basically employer has been taken any disciplinary action against the employees. In that eventuality, the court has power to modify the punishment of an final order awarded by the employer, or final decision given by the employer, like dismissal of services.
So the quantum of punishment can also be modified by the Labor Industrial Tribunal uh, under section 11A of the Industrial Dispute. So see, right now I am not in a position to elaborate much more, because give me some another day, then I will give you some details, some other examples. Sir, broadly, if may I, sir, with your kind permission, Sir, please. one among labor laws is Industrial Dispute Act. Haan. There are multiple laws there. If I'm not wrong, then there are 17, 18 central laws which combined together becomes the complete labor law. And central government also came with a labor code, if I'm not wrong, a few years back. So, Sir, yes. See, things that, because with the passage of time, all the acts were passed. Earlier in 1947, the industrial dispute was passed. In 1972, the payment of gratuity was passed. So with the passage of time, when the government has considered that there are a lot of different kind of disputes has been raised. So in accordingly, the court the parliament has passed the acts. So in all the, if you will see all that, all acts are just of legislations which somewhere helps the workmen in with regard to their entitlements, wages, unpaid wages, bonus, gratuities, like that. Or every act has been passed with the specific their controlling authority or the adjudicating authority. So I will please give me some time. I will definitely give you it in detail. I will elaborate every act in perspective way why this act has been passed by the government. and sir, Yes, is the definition of labor differs from act to act? Is the definition of labor differs from act to, like definition of labor in Industrial Dispute Act is different from Contractual Labours Act? Yes. See, initially these are some branches of the industrial dispute. You can say labor. These are the branches that has been passed with the exigencies of the law, with the exigencies of the disputes which were raised at that relevant time. I think in 1980, the Labor Abolition Act was passed, because the government has lot of cases were appropriate government has seen lot of cases were coming out from the industries. So there are differences between the employer and employees. That is why they have passed the Contract Labor Abolition Act, or they have given places to the employer as well as how to employ a person through contractor. So these are the act they has been passed with the exigencies of the society, with the exigencies of the disputes, which is the exigencies of the dispute or differences that has been rose from the different times. So this is the point. So every act has been passed with the requirement. When the government seen the requirements, so that definitely the government has passed they have formed new acts, like the Contract Labor Abolition Act. There are the Payment of Wages Act. Now the question is why the Payment of Wages Act had been passed when there are a lot of cases. So there is another special clauses are there, like Payment of Wages Act. When there was no provision in industrial dispute how to govern the payment of the employees. Like when suppose a person, suppose a workman or employee committed any mistake, or by mistake he had committed a damages, then in that eventuality, how the employer will recover the amount? That has been not codified in any law. So that is why now the society or the government has seen this problem is being emerged out from the industry. That is why they have passed the Payment of Wages Act. Otherwise, there was no need. Likewise, shops and establishment. Why it was needed to
shops and establishments, because there are third, there are a lot of shops in or small establishment where 2 or 3 persons are employed. And so the person who is aggrieved by an employer for not paying any wages, so then where he has to go? Other ultimately he has to approach to the court. So in order to prevent the pendency or you can say mushrooming the cases in the labor court, that is why government needed. Government thought no, there must be fix- some act which will you can say which will We should be address benefit. the particular issue involved in the act. Yes. So that is the all the acts were passed after one or two uh, one by one they has passed, because the government had seen the eventualities are there are a lot of problems were coming out from that. So in order to meet out these problems, the government has told me no, the law should be enacted. So that is why the acts were passed from time to time. This is the point. So every act is having a comprehensive act, having a separate legal remedy. No act is repugnant to any other act, or no act is repugnant to the constitution of it. That is separate. Every act has a separate remedies, separate authorities, adjudicating authority, who has been adjudicating the claimants or whatever what those parties who oppose them, they have to decide. Like the employees compensation. Earlier it was a workman compensation act. Then when the government seen that there are a lot of cases are coming out from the society, from the industries, the where the employees are being um, who have been injured in the industry while working in the industries. So the government enacted a workman compensation act. So these acts were passed on the basis of the needs of the court. So every act having a separate remedy, and comprehensive. All acts are comprehensive. They are separate. They are not overriding effects on any other law. This is the point. Or sir, anything else? And sir, but the current government has come up with a comprehensive labor law code, sir. The current Ah, yes. government has come up with a labor law code which has not yet been notified to my understanding, sir. If I'm wrong, please correct me. It has not been codified. It has not been notified. The code has not been notified as on date, sir. Are you talking about the latest law which was Yes. no. Actually, the thing is that there is some obstacles from the states governments, Okay. because Okay, sir. the Industrial Dispute Act is a central act. Mhm. By implementing the industrial relation code, Yes, sir. ultimately all the acts would be abolished, right? Yes, sir. So every state has a separate legal labor laws. Like UP has a separate UP industrial dispute, MP has a separate, Maharashtra has a separate. So in, before implementing the industrial relation code, the government has been seeking the objections from there every state, and after having considered all the objections, then only the Industrial Dispute Act will be implemented. So till date, the Industrial Dispute Act, Industrial Relation Code is not in existence. So we cannot take any benefits of, because there are chances that the code can be amended, because code can be amended. No, there is a lot of objections from the states and union. There are a lot of unions who are opposing, because there is some provisions. Now they are seeking that these provisions are repugnant to the Industrial Dispute Act. So there are a lot of objections, so that has to be decided by the parliament. Then only that has been implemented. So code has been passed, correct. But there, before implementing the code, the still the parliament has power to seek the objections
and that objection can be incorporated in the law code. So that is why the industrial relation code is still in abeyance. And let us see whatever what the And government how do you see, sir, that this code is beneficial for more towards laborers or towards the industries, or it's a balance of both between the industries and the labor, and more particularly, it reduces down the legal hierarchy with hierarchy and the scattered way in the which the law has been scattered, sir. see things that see, when the act is enforceable, right? When the government notified any act, like recently the criminal code was notified by the government. So there are a lot of provision which has to be scrutinized by the court. Judicial remedies is there. So like that, when the industrial relation code will notify, definitely there will be a lot of petitions will be go to the apex court for the judicial remedy, because there are a lot of things in the new industrial relation code. They have given some more benefits to the employees also, or employers also. It is a balanced act. No doubt it is a balanced act. But still there is objection, because they are the position in India, they have taking objection for the sake of taking objection. This is also one point. Because they are That is an entirely different issue. That's because they have to take the objection on the ground that the court is will take the rights change is of not the. easily acceptable, I say, sir. The change is not easily acceptable. Yeah, That's all I definitely say. sir. There are a lot of things. लेकिन ऐसा होता है ना कि सर उसमें when the government will notify the work, so So that's definitely I understand, sir, that when the government will notify it, the fruits will can only be ripe only after the notification comes into play. After the yeah, notification. definitely. But And still, see, suppose one section is there in the industrial relation code, yes, sir. which has been newly inserted in this act. Suppose now the people who is aggrieved by this, suppose an employer is aggrieved by that, so definitely employers association will go to the apex court. This section is repugnant to Constitution of India. So kindly ask the government not to notify, or this section may be kept on abeyance, like in the BNSS or Bharatiya Nyaya Sanhita. There is a provision of 304A. So in that, the government has initially given proposed the punishment of 7 years, and the person who were the transporters, they have raised objection, they have called strikes, etc. And ultimately, in the pressure of that organizations, the government has kept this punishment in abeyance. Now, still the punishment is still for 2 years only in 304A. So like that, in the industrial relation code, the government can do no problem. This is not a very big issue. The government can be or not be can be done or not be done. This is the point. But when the government will notify, then we will see whether we are benefited or whether we will get the fruits of the act or not. So we will. Sir, so what is the role of trade unions in a labor law, sir? How they are significant? The Sir, trade actually, the unions. role of the labor laws, role of role of unions in Trade the unions, yes. labor laws is very important, because when a cause of collective bargaining is there, right? Yes, sir. Not a collective bargaining. Suppose we are staying in Delhi. If you see that municipal corporation is there very big organizations in Delhi, right? Yes, sir. Suppose suppose the MCT has notified that the person who had tendered more than 480 days, they will be regularized, right? Now
Now, in order to consider their individual claim or clear their individual claims, what they do? Suppose the commissioner says, no, we will give benefit to those who have a previous record also, who have worked previously also, or not for two. Suppose they can take any municipal order, they can pass any municipal order. In that eventuality, the union will take the cause of the workmen before the court. Now the cause of the collective bargaining, that has to be decided by the industrial tribunal, because industrial tribunal are having the powers to decide. So there are a lot of things, the lot of disputes which are covered by the collective bargaining under section 2K of the industrial. So generally the labor laws, the trade union plays a very good role. When the employer has to implement the new policy, then he has to take a consent of the trade union. Now, suppose a company having more than 100 employees, and he wants to put certified his own rules code of conduct or standing orders, right? In that eventuality, the union is the party. So unless there is a union, the employer will do whatever he wants, right? So there is no check and balance. There would be no check and balance without any trade union. So trade union plays very good, effective role. Sir, I have a question. Okay. Sir, it's a very simple question, sir. हाँ सर. कोई भी एम्प्लॉय जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, हाँ सर. what is his recourse? Let's assume for illegal termination, and sir हाँ. उसकी gratuity वगैरह उसको कब उसको consider करना चाहिए that to try and get it, and what is the best recourse for him to get his money? सर देखो ऐसा ना कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, इट इज ए जो है लीगल राइट है, इट इज नॉट वाउंटिंग, राइट? पहली बात तो एम्प्लॉयर जो है किसी को ग्रेचुटी जो देता है आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये जैसे बोनस होता है ना कि आपने मेरे यहाँ इतना सन काम किया, लो आपको मैं एक ग्रेचुटी मतलब एक प्रकार से आपको एक बेनिफिट दे रहा हूँ, मॉनेटरी बेनिफिट, एंड दैट हैज टू बी कंसीडर और कैलकुलेटेड आफ्टर द सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी कोई आदमी मान लो सपोज कि वो कहता है जी आई हैव बीन टर्मिनेटेड रॉन्गफुली, नाउ द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, so his employment is a employment is the employment, whether he will be employed or whether he will be reinstated is still sub judice. अभी तो sub judice है ना, अभी कोर्ट डिसाइड करेगी whether termination is legal or illegal. So is that eventuality how he can say that मैं मेरी gratuity दे दोगे, because there is no cessation of employment. Cessation of employment होगा जब when the court has come to the conclusion that the termination was illegal and he was rightly terminated. In that eventuality the person will say okay जी मैं जब मेरी सर्विसेज अगर ठीक टर्मिनेट किया था ना, प्लीज गिव मी माय ग्रेचुटी अमाउंट. So that only be distributed or that has to be calculated only after cessation of the employment. This is the point. This is the gratuity. The law of the gratuity says so. एंड सर व्हाट इज द रिकोर्स जब किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उनको कंपनी से अनलॉफुली टर्मिनेट किया जाता है, कि उनको बुलाते हैं और दैट यू आर आस्क्ड टू रिजाइन, देन सर व्हाट इज द रिकोर्स फॉर दैट पर्सन? सर उसमें देखो ऐसा ना कि नाउ थिंग इज दैट कि उसमें रिकोर्स ऐसा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉइज को कहता है नाउ वी वांट टू टर्मिनेट यू, मतलब सपोज वो ही इज रेडी टू फायर हिम. Now the workman, it is to workman who has to opt to what steps he has to take. अगर वो कहे नहीं जी मेरे को टर्मिनेशन गलत है, मैं I will challenge the termination. So I don't want to go for the settlement. I don't want to go for a
any settlement, I don't want to resign from employment. I will face the decision of the employer. वो कहता है जी नहीं, आपने मेरे को अगर डिसमिस करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, I will face you because you have to explain me reason either before me or before the court. So उसका मेन ये है कि अगर ऐसी इवेंचुअलिटी पे he has to decide himself वो क्या चाहते हैं. अगर वो कहते हैं नहीं जी मैं अगर फेस मतलब मैं आई एम बोनाफाइड, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम मेरी कोई गलती नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, देन वो कहेगा नहीं जी मैं तो आई विल फेस द योर डिसीजन, आई विल चैलेंज योर डिसीजन, आई विल फेस योर कॉन्सिक्वेंसेस, आई डोंट वांट टू गो फॉर ए सेटलमेंट और आई डोंट वांट टू resign from my employment. This is the course. This is the best course. And sir, may I ask हाँ सर. सर इसमें हाँ फॉर सर वर्कमैन की कैटेगरी में कौन कौन आता है? द पॉइंट इज जस्ट लाइक any employee of a company can be forced to either resign or it may be unlawfully No. terminated. So whether Sir, मतलब is there any category or class of employees who fall within the category of workmen, or any employee across the hierarchy can do fall in the definition of workman in the under Industrial Dispute Act or under any law like gratuity and all? no, sir. Actually, if only in Industrial Dispute Act, under Section 2S of the Industrial Dispute Act says the person who has been working manual and clerical nature is a workman, and if he do so, then he is a workman. He can take the benefits under Section 2S of the Industrial Dispute Act. He is covered under 2S of the Industrial. If he works manual and clerical in nature, if he works supervisory administrative nature, his nature of job is supervisory and supervisory or managerial, he does not cover under the 2S of the Industrial Dispute Act. In that eventuality, he cannot take benefit under section. Sir, irrespective of sir, sorry to interrupt you, sir. Irrespective of his educational background, for example, a person who is merely a 12th pass, but because he's working in an organization and he has been promoted to a supervisory in nature, the work is now supervisory in nature, despite he being only a 12th pass. So will he also be ousted from the definition of workman, or still he will be falling within the workman of definition of workman, sir? Sir, see, the definition depends upon the dominant nature of duties, right? Suppose a person who is forget about his education qualification or wages is being drawn by him. What is the dominant purpose of employment? What he is doing? If he is doing, suppose he is doing administrative work. Suppose I am simply a graduate, right? Yes, sir. Earlier I was assistant. Now I am executive. But now I am doing some administrative work, like I am granting any leaves, I am sanctioning something. So my nature of employment is now altogether changed. Now I am not a workman. Now I am doing the administrative work. So I will not cover under Section 2S of the Industrial Dispute. So it depends upon the person to person, employees to employees. And the court has to see dominant purpose of employment. What is his main nature of duty? If he is doing clerical, manual, then he will be the designation doesn't matter. The designation is no dispute, doesn't work. Only nature of duties is will work. Correct? Thank you, sir. And please, Keshav, you go ahead with. There are two things. First of all, Shaily sir, how do I say deepest gratitude to you for being so kind that you are so pressed in your position right now. Yet, sir, you've taken the time out, so we're grateful to you. But, sir, considering the fact that the topic is so interesting and the manner in which you teach, it is so brilliant that obviously, sir, we will have other and more sessions with you. केशव जी, सॉरी आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक चौधरी फोड़ मुझे फनेगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो शैली साहब को नमस्कार करो पहले। कहाँ है? हाँ, शैली साहब, नमस्कार। शैली साहब, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सैलरी का है ना, कि अगर मान लो सैलरी उसकी 45,000 है
और उसने जो है उसने वहां कोर्ट में ये एफिडेविट दे दिया कि मैंने कोई भी काम मैनेजरियल कैपेसिटी में नहीं किया है कंपनी में। ठीक है। अब वो जो है तो बर्डन ऑफ बोनस तो उसके ऊपर लाई होगा ना, नहीं एम्प्लॉयर के नहीं ऊपर के उसमें वो नहीं, नहीं सुने मेरी बात। उसमें दो बातें, एक तो इनिशियल बर्डन होता है आपके पास, ठीक है। इनिशियल बर्डन आप डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। चलो। हाँ। उसमें आप बताएंगे कि मैं, देखो एम्प्लॉयज को ही बताना पड़ेगा ना मैं क्या क्या काम करता ना हूँ ना, वहां वो पे। प्राइमरी प्राइमरी नहीं इनिशियल स्टेज पे आप सही कह रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसकी वो जो मैनेजर की पोस्ट के लिए उसने लगा दिया कि साहब आपकी पोस्ट मैनेजर की थी, लेकिन हमने ये लगाया कि हमने कोई वर्क ही नहीं करा एडमिनिस्ट्रेटिव और इस तरह का वर्क नहीं करा, सुपरवाइजर नेचर का काम नहीं करा। हमने ठीक है, आपको जो है 151 में एप्लीकेशन दे के उससे ठीक है। कहा कि भाई ये आप बर्डन ऑफ आप हमारे प्रूफ का जवाब देते हो कि हमने किस कैपेसिटी में काम, हमने मैनेजरियल कैपेसिटी में काम नहीं करा। अब हम जो है हमको वर्कमैन गिना जाए। अब वो 45,000 से ऊपर की सैलरी है हमारे, सैलरी थी भी समवाट जो आल्सो देयर, तो सैलरी हाँ का भी इश्यू हो जाता है। तो सैलरी जो अगर हाई है तो वो हाँ, अगेंस्ट जाती है। नहीं सैलरी नहीं है, आपका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो कहती है हाँ हाँ, सैलरी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। सैलरी का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, दूसरी अच्छा बात आप दूसरा। ये देखेंगे, आप सुने मेरी बात प्लीज, मेरी बात हाँ सुनो। हाँ जब सर, आप थैंक यू। जब आप कोई क्लेम बनाते हैं ना, तो आप इस हाँ चीज का ध्यान रखें कि क्लेम में उसकी जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है, उस मान लो उन्होंने अगर वो पर डे आके मान लो दरवाजा खोलते हैं, कुंडी खोलते हैं किसी ऑफिस की, मतलब माइन्यूटली जो भी काम करते हैं वो हाँ सारे हाँ सारे चीज को लिखो, तो हाँ। आप प्राइमरी ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज कर चुके हो, ठीक है ना। प्राइमरी बर्डन आपका खत्म हो चुका है। सर वो बिल्कुल वेरी राइट। अब उसकी कंट्री अगर कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप तो हो ही वो गए सर टीएस में। वो नहीं, वो सर मैं जरा इतना थोड़ा लूंगा कि अगर हमने ये कह दिया कि भाई आपने डेजिनेशन तो हमारा वो मैनेजर का दे दिया था, लेकिन कोई कैपेसिटी में उन्होंने मैनेजर में काम नहीं करा और ठीक है, इसके हमने एज ए वर्कमैन काम किया ना सुपरवाइजर नेचर में काम किया, हाँ, तो वो भी ठीक है। हमने जो उसका रिप्लाई हमने कहा कि हमारा जो वर्क था वो हॉस्टल में काम करने के लिए उनको जो है वहां पे बैठ के उनके लिए उनका इंतजाम करना था, उनके वो सारे मैनेजमेंट वगैरह के जो इंस्ट्रक्शंस आती थी उनको हमने फॉलो करना था, कंप्लाइज करना था। ठीक लेकिन है, वो कह रहे तो वो जो है ना, अगर हमने ये दे दिया कि आप प्रूव करो कि हमने तो कोई काम नहीं करा मैनेजर के, अभी आई एम स्टैंडिंग एज ए वर्कमैन, अब वो बर्डन ओनस हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना इन एम्प्लॉयर पे। हमने तो इनिशियल ऐसा होता स्टेज है ना, जैसे सुनो, आपने कहा। हाँ जी। अच्छा ये दूसरा सुनो, मैं जी तो सर। एक मिनट में आती है, एक मिनट लूंगा आपका, सुने। जो हाँ ऐसा होता है कि आपका प्राइमरी जो बर्डन होता है वो डिस्चार्ज कर दिया आपने, ये क्या है हाँ क्योंकि हाँ जी। मैं ये करता हूँ, उसके बाद वो ऑनर्स उस पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ओहो। वो एम्प्लॉयर उसको कहेगा, कॉन्ट्ररी एविडेंस लेके आएगा, नहीं साहब ये नहीं करते, ये काम करते थे। आप समझे बात को। और ठीक है अगर सर। वो नहीं लेके आते तो फिर वो आपका आपका इश्यूज डिसाइड हो गया आपके फेवर में। वेरी गुड, वेरी राइट सर, यही यही सुनना चाह रहा था। दूसरा सर मैं ये कहना चाह रहा था 33C में जो हाँ जी, हम वो विद इन 1 ईयर का है, तो लिमिटेशन में अगर वो लिमिटेशन में हम ये लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है इसमें? नहीं नहीं, उसमें ऐसा 33C1 में जो आप जाते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन अवार्ड है ना, हाँ जी। 33C1 में गए हो ना हाँ आप। सर 33C1 में गए तो मान लीजिए हमारी पेंडिंग सैलरी है, पेंडिंग कोई सैलरी बात नहीं, है आप तो उसमें अवार्ड को ना अगर सेक्शन 17 देखेंगे ना, ओ, तो सेक्शन 17 में पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड है ना, उसमें उसने कहा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसका पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को वो बाद में भी एंटरटेन हो सकती है, आप उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाएंगे, हाँ तो लिमिटेशन भी लिमिटेशन नहीं एक्ट, लगेगी। हाँ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई एप्लीकेबल है। नहीं, अच्छा इंटरेस्ट। लिमिटेशन है कि ऐसा सिलेक्ट नहीं, लेकिन ये एक कंडोनेशन ऑफ डिले, मतलब कंडोनेशन ऑफ डिले की आप लगा सकते हो, लिमिटेशन आप एक्सटेंड करा सकते हो, एक सिंपली सीटर एप्लीकेशन के मार्फत, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। नहीं सर मैं तो कहना चाहता है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 के एप्लीकेशन के अलावा नहीं, सारा आप ऐसे वो। सुने सुने, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट सिर्फ सूट और सिविल सूट पे लगती है और कहीं नहीं लगती, अच्छा इसलिए इसमें उसका नहीं लगेगी। प्रोविजन का इस्तेमाल ना, हाँ हाँ भाई उसका यही यही पूछना चाह रहा था मैं, यही यही था। उसका नहीं, आप ये सिंपल सिटी वैसे ही लगाया ना, अथॉरिटी को पावर होती है। तो जी जी, यहाँ पे थोड़ी सी लेबर केसेस में सेक्शन 5 की एप्लीकेशन 33C में नहीं लगेगी। आपको लगाने की जरूरत है, आप सिंपल सेक्शन का प्रोविजन ना लिखे ना, लिमिटेशन का ना लिखे, और सिंपल हाँ लिखे कि जी हमारी जो डिले है उसको कंडोन कर दिया जाए, बात खत्म। तो वो किस क्योंकि प्रोविजन ये में सर 5 में ही तो करेगा?
ऐसा होता है ना सेक्शन प्रोविजन उसमें, सुने वो बात, तो तुम उसी को सिर्फ सेक्शन, आप उसको प्रोविजनों में जाने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप अच्छा सुने अच्छा बात, अच्छा। हाँ हाँ अगर आप सीपीसी के प्रोविजन पढ़ोगे या लिमिटेशन के प्रोविजन पढ़ोगे तो आपको फिर एक एक दिन की हाँ, वो लिमिटेशन, फिर तो माइन्यूटली माइन्यूटली हाँ, इस वो आपकी खिलाफ प्रोसेस करा पे आ जाएगा, जाए। ठीक है ना। तो दूसरा सर अवॉइड करें सेक्शन को लिखने के हाँ, लिए। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाह रहा था सर, इसमें इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, दूसरे और एक्सपेंसेस तो मिल जाएंगे ना हमारे 33C में। नहीं, इंटरेस्ट किस चीज का नहीं मिलेगा आपको, बताओ। जो मान लीजिए जो हमारा क्लेम है, हमने जो हाँ क्लेम किया है वो विदाउट वो हमने तो अपना क्लेम किया, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है ना इसमें 33C में। नहीं 33C में जो 33C में तो जो है ना, आप 33C वो कह रहे हो, 33C2 कह रहे हो। सी, हाँ, 33 में है जो जो अब वो एक्चुअली क्या है कि वो अवॉइड कर रहा है ना उसको, इंटरेस्ट को। वो कह रहा है आप ओरिजिनल नहीं, विदाउट इंटरेस्ट आपको अवार्ड जो मिलेगा, कंपनसेशन जो मिलेगा आपका, अवार्ड जो है, जो भी आपका अवार्ड में अब आप अवार्ड सुने। एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है क्या है कि हमारी साल भर की सैलरी है उसके पास, हमने वो अच्छा, टोटल क्लेम कर दी। क्लेम करने ठीक के है, बाद में अब वो जो है उस पे एविडेंस पे चल रहा था मैटर, तो हमने कहा ठीक कि है, भाई ये जो है ऑलरेडी आपने जो है इतना जो है ये हम वर्कमैन की डेफिनेशन डिवाइड में कर आते दिया। ही वो कर दिया। अब वो हाँ, उसमें 33C में इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है, तो वो उसमें दूसरे एक्सपेंसेस हैं, तो वो दूसरे एक्सपेंसेस जो हैं वो तो हमने क्लेम में लगाए हैं, तो उन्हें तो पास देखो ऐसा करेगा है वो ना, इंटरेस्ट छोड़ के। आप ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनिए, आप अगर सेक्शन 11 में जाओगे कॉस्ट का प्रोविजन है, ठीक है ना। हाँ, तो कॉस्ट मतलब समझ लो, कॉस्ट वही होता है, कॉस्ट का मतलब कीमत नहीं है, कॉस्ट का मतलब किसी भी कोई सी भी कीमत को कॉस्ट कहते हैं। 11 में सर। तो हाँ, तो आपको इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है जो भी है, ये आपके ऊपर जो जुर्माना उस पर ठोका वो सब कॉस्ट में कवर होता है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा आप अच्छा। वो कॉस्ट के लिए आप हकदार हो, और वो उसकी ड्यूटी है, उसको दें आपको, ये कोर्ट की ड्यूटी है, वो कॉस्ट भी विद कॉस्ट पे आपका क्लेम अलाउ करें, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अच्छा शैली और साहब नमस्कार। और आप चाय के लिए नमस्कार। आमंत्रित हैं, कभी जो है ना वो मेरे को फोन में दिल्ली में आपको फोन करके और अच्छा, आपके लिए इनवाइट करूंगा चाय के लिए। तो ठीक है मैं सर, ठीक। आता रहता हूँ मैं दिल्ली मुजफ्फरनगर से, तो हाँ कोई इसलिए नहीं, मैंने आप, हाँ, ठीक है, ठीक थैंक सर यू। है, सर एक वेलकम। हाँ सर, एक हुक्म। सर एक हाँ सर, क्वेश्चन सर रस्तोगी सर का है। रस्तोगी सर आप हैं अभी यहाँ? हाँ सर, रस्तोगी सर आप हैं अभी? तो चलिए सर मैं एक बार रस्तोगी सर का क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हाँ सर, सर ये बोलते इफ contribution deposited in EPFO was transferred to state public deposit PD account, अच्छा, the deposit has not been paid to the employee by the employer, then sir what is the हाँ treatment? सर, अगर ऐसा ना कि इसमें जो एम्प्लॉइज जो आपका प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास से जो भी रेमेडीज है वो सेक्शन 7A में, 7A में, तो 7A में ना आप एक कंप्लेंट, सिंपलिसिटरी कंप्लेंट मूव कर सकते हैं सारी ग्रीवेंसेस को, तो वो एडजुडिकेट करेंगे। अगर वो मान लो 7A में कोई आपके जो है एडजुडिकेशन ठीक नहीं होती, देन यू कैन प्रेफर एन अपील बिफोर द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल अगेंस्ट दिस ऑर्डर, दिस इज द पॉइंट। Sir, Commissioner, hello. Yes please. Sir, Commissioner has decided that complaint and ordered that the deposited money has been हाँ, transferred to the employer, हाँ, but the employer is not giving the deposited money to the employee. That's the अच्छा, problem. तो आप उसमें एक काम करें ना, आपने जब ये इसकी जो 7, आप जो कमिश्नर ने वो करा, आपका Sir, क्लेम डिसाइड किया, तो sir. आपने उसको ऑब्जेक्शन रेज करे कि साहब ये इस तरह का ग्रीवेंसेस अब हमारी पूरी तो हुई नहीं, इसमें आपने जो किया और डी एम्प्लॉयर को कर दिया, वो हमें तो पेमेंट हो ही नहीं रही, आपने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया कुछ? हाँ, रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने फाइनली डिसाइड करके ये कहा कि पर्टिकुलर ईयर्स के जो डिपॉजिट मनी हाँ, एम्प्लॉयर के अकाउंट, पीडी अकाउंट, ये जो स्टेट का पब्लिक डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें डिपॉजिट करा दी गई है। हाँ, उन्होंने पर्टिकुलर रिटर्न में दिया, हमको रिटर्न में उसका रिप्लाई नहीं, दिया। उससे देखो उसने जमा करा दी है, राइट, आप कह हाँ, रहे कि उनके हाँ, अकाउंट में जमा करा दी। एम्प्लॉयर के, थिंकिंग दैट एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर के, मैं बताता रहा हूँ ना, आप एम्प्लॉयर के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, तो फिर हम्म। आपको उससे क्या क्या बेनिफिट हुआ?
बेनिफिट तो नहीं वो हुआ। हमारा डिपॉजिट, हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में डिपॉजिट था, वो मनी वापस एम्प्लॉयर के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। हाँ, तो आप वही मैं बता रहा हूँ ना, आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो आप ऐसा करें ना, हाँ। आप उसकी अपील हम्म। आप जो है ना इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में कर सकते हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज करें इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में। जी। ठीक है? जी। आप उसमें जो है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएं कि साहब ये जो इन्होंने जो ऑर्डर किया दैट इज नॉनेस्ट ऑर्डर, बिकॉज द मनी which was meant to be disbursed to us, which was meant to be disbursed among us, has been transferred to the non-nest जो भी है, नॉन सर एम्प्लॉयर सर जो भी है। सर तो वो फिर उसके ऊपर वो रिप्लाई देंगे भी आपने ऐसे गलत क्यों किया, दिया तो देन दे विल कंपनसेट यू। ठीक है ना? sir, in हाँ that the employer and pf both will be the parties respondents. हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज आप जब Sir. वो करेंगे ना उसको, Sir. आप ऑर्डर को चैलेंज हम्म। करेंगे तो देन सर डेफिनेटली तो इम्प्लीट करेंगे ना किसको किया है, बिकॉज एग्रीड सर सर पार्टी वो जो जो उसका ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट दोनों पे ही होगा ना। सर सर तो ट्रिब्यूनल वो दोनों को डायरेक्शन देगा कि सर आपने गलत किया, ये आप डिपॉजिट कराओ वापस रिफंड करो, और एम्प्लॉयर उसको सर रीपेमेंट करे, उसको सॉरी कमिश्नर रीपेमेंट करे उसको। सर सर thank you very much sir. ओके, वेलकम सर भाई। हाँ सर। सर, अब सर इट्स बीन वेरी काइंड ऑफ यू, एंड सर बस मैं एक अपनी साइड से एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा, उसके अलावा अगर एक आधा और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपके पास रख देंगे। बट सर फॉर हाँ अ सर बोलिए। ब्रीफ, कोई हाँ एक सर। व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, हाँ उसको अगर अपने एम्प्लॉयर के साथ किसी किस्म का डिस्प्यूट होता है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? सर, अगर उसका डिस्प्यूट किस नेचर का, अगर अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नौकरी का है तो उसको उसको तो आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ही जाना पड़ेगा ना। अगर डिस्प्यूट किस तरह का है ये भी देखना पड़ेगा ना, किस तरह का, किस नेचर देखनी पड़ेगी सर। किस किस किस्म के डिस्प्यूट हो सकते हैं और वैसे में वो कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं? अगर मान लो उसको वो एम्प्लॉयमेंट में तो है, और एम्प्लॉयर कहता नहीं भी आपको जो इस साल बोनस नहीं मिलेगा, या आपको रिवीजन इन वेजेस नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगी, या आपको डिमोट कर देता हूं मैं, या आपको ट्रांसफर करता हूँ, तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई ना सर। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हर जो भी है वो डिस्प्यूट ही डिफरेंट हो गया सर। तो डिफरेंट डिस्प्यूट डिफरेंट रेमेडी। ठीक है ना? जी सर, जी सर। हाँ, तो सर इज पहले उसे वेरी ये सर रेमेडी अप्रोप्रिएट फॉर्म पे जाने से पहले उसे ये अपनी ग्रीवेंसेस वो तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, ग्रीवेंसेस को तो देखना पड़ेगा ना कि किस नेचर की है, उसके हिसाब से उसकी रेमेडीज आएंगी। अगर सपोज किसी एम्प्लॉइज को मिनिमम वेजेस से नहीं मिल रहा है तो उसे कोई डिस्प्यूट नहीं, उसे तो सिंपली कमिश्नर के ऑफिस में जाना है, उसने कहना चाहिए मिनिमम वेजेस मेरे को देते नहीं, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कराएं, मेरे को मिनिमम वेजेस दिलवाएं, सिंपल। अगर वो कहते हैं जी आपको सबको मिनिमम वेजेस तो मिल रही है, सबको सबको सैलरी इंक्रीमेंट मिल रही है, तुम्हें नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो उसकी दूसरी तरह की रिलीफ है। अगर उसको कोई टर्मिनेट कर दिया तो उसकी और रिलीफ है, सुपरसीड कर दिया तो उसकी है, पर डिमोट कर दिया, प्रमोट कर दिया, तो लाइक दैट है। तो डिफरेंट डिफरेंट सर उसके डिस्प्यूट जो होंगे उसकी वो दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, और उसकी उसकी ग्रीवेंसेस टू ग्रीवेंसेस। सर्टनली सर, सर्टनली सर। सर बट सर मेरी आशा यही रहेगी कि आपके साथ हमें एक एक्सटेंसिव मौका और मिल पाए जहां पर सर मैं हम तो सर डेफिनेटली दूंगा, मैं एक्चुअली सर आप आज मैं सॉरी फॉर दैट आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं आज बड़ा थोड़ा बिजी हो सही गया सही क्या करूं। नहीं नहीं सर, इट्स वंडरफुल कि आपने इतना ऑक्यूपाइड होने के बावजूद आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मूल्यवान है हमारे यू लिए। ऑल आर माय यंगर ब्रदर सर, आई कैन डू फॉर यू नो प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज आप मेरे ग्रेटिट्यूड। छोटे, ठीक सर। एंड विद दैट सर धनंजय जी से पूछ लेता हूँ अगर उनके पास और कोई सवाल है। धनंजय जी, और कोई सवाल है अभी सर के लिए? सर अभी तो कोई चैट बॉक्स में भी नहीं देखा मेरे को, और शायद मेरे पास भी नहीं है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट बट आज जानबूझ के सवाल पूछने का मन नहीं करे धनंजय गुप्ता जी का। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे जितने गेस्ट हमारे साथ आज और मौजूद हैं, मेरा आप सबसे भी एक अनुरोध है, अगर किसी का कोई सवाल है अभी, कंसिडरिंग जिन भी परिस्थितियों में बट सर का मौका और अटेंशन हमें मिला हुआ है, तो अगर कोई सवाल है आपके पास तो भी पूछ सकते हैं एक बार। तो
आई थिंक और कोई सवाल है नहीं, तो अब मैं एक बार हल्का सा एक छोटा सा एक वो सर मैं अभी हम क्या कर रहे हैं सर, डीएलएसए के बारे में भी मैं एक बार थोड़ा सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ मेरी सर। सर से मुलाकात भी मेरी ऐसे ही हो पाई कि जो हिडन जेम्स, कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि लीगल सर्विस एडवोकेट्स जो हमारे पास हैं, दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, जो मुझे समझ में आ पाता है। दीज आर जजेस जो उनको support करते हैं। एंड शैली हाँ सर से ठीक भी है मेरी सर। ऐसी ही बात हो पाई है। हाँ सर। सर आप कुछ बता देंगे लीगल एड के बारे में? सर लीगल एड में सर मैं क्या बताऊं आपको, बस ठीक है, लीगल एड सर्विसेज है, सबको फ्री सर्विसेज दे रही हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ठीक है ना, और फाइनेंशियल स्टेटस। ऐसे लोग भी हैं जिन जो दे आर हैंडसमली अर्निंग बट स्टिल दे आर गेटिंग दी सर्विसेज। सैली बहुत साहब अच्छी है। बढ़िया है। जिसको हाँ सर। पेड करके खाना है वो पेड करके खाएगा, जिसको फ्री का खाना है वो फ्री का खाएगा। हाँ, थिंग इज दैट। दोनों ही बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ, तो सर सीधी वो बात है जी। जो कोई स्कीम निकाली जाती है वो इसलिए निकाली जाती है कि एक लास्ट पायदान में जो आदमी है उसको मिलनी चाहिए, लेकिन आपको तो पता है हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिस्ट आ रही है, तो सबसे पहले तो तो वो। लास्ट पायदान वाले के लिए तो हाँ होता है। अब वेलफेयर की स्कीम कितनी चल रही है? अब तो ये थोड़ा बहुत हर जगह की पोजीशन ऐसी हो रही है कि वेलफेयर की स्कीम तो सारी बंद हो रही है। तो हाँ एफिशिएंसी नहीं है ना। पहले आप हाँ। आपके टाइम में पानी पानी फ्री में पिलाते थे, अब पानी फ्री में नहीं पिलाता कोई आदमी। तो फिर क्या क्या नहीं नहीं, वो। देखो ऐसा है ना, देखो जब किसी चीज का एक्सटेंसिव मिसयूज होने लग जाता है ना, तो सबसे बड़ी बात ये हाँ, है, आप समझे नहीं, अगर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हर हमारे हिंदुस्तान में हम पेट्रोटिज्म नहीं है, आप समझे नहीं, देशभक्ति नहीं है। आदमी सोचता है छोड़ो मैं अपना। सोली सैली साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। देशभक्ति की तो कमी नहीं है, लेकिन नहीं नहीं वो नहीं सर, नहीं मैं देता हूँ, नहीं नहीं देशभक्ति तो आप बहुत है, सुनो मरने के लिए है, सर, मैं जीते वही जी बता नहीं रहा है। हूँ। सुनिए सुनिए, देशभक्ति का मैं ये नहीं कह रहा कि खून बहाना, देशभक्ति का मैं बता रहा हूँ हाँ, वो आपको कि जो खून बहाने के बात है लिए तो देशभक्ति है, वैसे वो नहीं है। नहीं चाहिए। आप वो मैं वैसी बात हाँ। कर रहा हूँ कि कोई बोलते पब्लिक हैं। प्रॉपर्टी अगर कोई डैमेज कर रहा है ना, तो आदमी कहेगा चलो छोड़ो यार, ये तो एमसीडी देख लेगी, डीडीए देख एक्चुअली क्या लेगी। है कि वो लोअर लेवल पे, जो लोअर लेवल पे उस पे पेट्रोटिज्म नहीं है। हायर लेवल पर तो मरने जीने के लिए तो बहुत है। कारगिल अरे वारगिल में सर, ऐसे लड़ने मरने वाले वो बहुत है, लेकिन अरे वैसे सर वो वाले नहीं सब है। ये बहुत सारी सॉरी बातें सर, हैं सर। सैली साहब। सर थैंक हाँ यू वेरी मच। ओके, ठीक है थैंक ठीक है ठीक है। हाँ सर। जी सर। तो सर अब खैर देशभक्ति तो थिंक हम सबकी बस यही बात है कि ऐसे तोड़फोड़ ना मचाएं सर। बिल्कुल सही बात है आपकी कि जीते जी भी बहुत जरूरी है देशभक्ति। सर ऐसा है ना ना ये कि जैसे मालूम, मेरे अगर कहीं 10 रुपए बच रहे होंगे ना और सरकार के लाख रुपए डूब रहे होंगे ना, तो मैं परवाह नहीं करूंगा। मैं कहूंगा यार मेरे 10 रुपए नुकसान नहीं होना चाहिए, पर सरकार का लाख रुपए हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। ये मेंटेलिटी हमारे यहाँ होती है। मानते कि नहीं मानते? हाँ जी, ऐसा तो है। हाँ करते हैं तो सर कि आप सबके जो गाइडेंस है, हमारे सारे जो सीनियर्स हैं, जितने विद्वान लोग हैं सबका, कि जो एटलीस्ट जो यंगर जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन आ रही हैं और बाद की जो जनरेशन है, कि ये लोग रादर अपने आप को अपने कर्मों से अपने आप को ऊपर उठाएंगे और गंदगी गंदगी ये सारी चीजें जो हो गई, तोड़ फोड़ हाँ फिजूल की हाँ, चीजें, उल्टे सीधे काम से हटा के कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को लगाएं। हाँ और कंस्ट्रक्टिव इस काम होना चाहिए तो क्या है? अब कंस्ट्रक्टिव काम होगा तो सब कुछ होगा सर। नहीं सर, मेरे को पूरा विश्वास है सर, ये आप सबके गाइडेंस से, आप सबका जो सारे सीनियर्स का हमारा आशीर्वाद है, जो सारे जितने बड़े हमारे देश में सारे बड़े बड़े जितने लोग रहे हैं और अभी भी जितने हैं, सबके आशीर्वाद से अच्छा ही करेंगे। सब मेहनती ठीक बच्चे है, हैं हाँ। ही। और सेवेंटी संघर्ष कर लेंगे हम थोड़ा और, बट इतना है कि आगे अच्छा करना है। ये सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख ठीक रहे है हैं सबसे एक सीधी रिक्वेस्ट है, गलत करना नहीं है और गलती से डरना नहीं है, लेकिन ठीक गलत है नहीं सर, करना है। तो बिल्कुल ठीक है। है ना सर, एक साथ में मैं सबको एक बताना चाहूंगा कि एक हेल्पलाइन नंबर है लीगल एड का, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, 15100 और 1516। आप कभी किसी किस्म की परेशानी दुविधा में हो तो प्लीज फोन कीजिए। है ना, यहाँ पर ये जो है ये काम सारे ऐसा नहीं होता कि ये फ्री का कोई काम नहीं है, ये सारे में सरकार दे रही होती है पैसे उनको, जैसे सर ने बताया कि हाँ गलत इस्तेमाल नहीं करना हमें उस चीज का, लेकिन इतना है कि कभी किसी दुविधा में हो, किसी परेशानी में हो, तो जैसे शैली सर हैं ऐसी सबसे विद्वान और सबसे जो वरिष्ठ और अच्छे अधिवक्ता हैं आपको, उन सबका आपको वहाँ मौका मिलेगा उनसे बात कर पाने का। तो
इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ कि हम अच्छा देश बनाएंगे, अच्छे लोग रहेंगे, हम सब सेवा में लगे रहेंगे। और इस सर के साथ भी एक हम वो ले लेते हैं, अभी शैली सर से भी एक कमिटमेंट ले लेते हैं कि सर एक मौका आप हमें और देंगे अभी कुछ सर टाइम में डेफिनेटली एक क्लास के लिए डेफिनेटली सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आज आई एम सॉरी जी फॉर दैट बिकॉज मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, नज़ारा दिखा देता हूँ सर इस टाइम मसूरी का क्या हाल है। सर देख ये लो तो आप, लगा दिख गया मसूरी का। सुबह से देखो सर ऐसे हो रहा है, ये हाल है। इतना कोहरा है कि पूछो मत, कुछ काम नहीं हो रहा। और जो हमारे भतीजे हैं दूल्हे मियाँ, वो सर मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट देखो सर, ये ये विनू है मैरिज का। ओह वाह सर, बहुत ही खूबसूरत सर, क्या वेन्यू है। ठीक है सर, ये हमारे दूल्हे मियाँ हैं। ये मैरिज अभी सर असेंबलिंग हो चुकी है, अभी मतलब हो गए, फेरे वगैरह हो गए, अब फ्री हो गए। सब हो सर हम हैं सर। सब हो हेलो। चुके हैं फिर ये? हाँ फेरे सर दोपहर के ही थे ना, इसलिए तो अभी हो गए सर, फिनिश। कमाल है, कमाल है। आपने सर शादी भी मैनेज कर दी और आपने हमारा ये सेशन भी मैनेज कर दिया। Sir, heartiest congratulations from the team of Vestralex, sir, to the to everybody, sir. Yeah, and, sir. ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय Thank you, बाय। sir. Thank you for your sir, time. Thank you for your valuable time that you have taken out for us, for the team, for everybody, sir. We'll सर see you in another class, sir. डेफिनेटली Please. डेफिनेटली आई विल ज्वाइन सर। ओके सर, बाय Thank you. All right, sir. This is gratitude. बाय। This is gratitude. Thank you so much to everyone who's participated. We'll be having these classes on Wednesdays and Saturdays. Look forward to see you. And if you find these classes meaningful, then please comment, share with your friends. This is absolutely for you, by you. And we're also looking for people who can host classes for us, do introductions to participate. राइट, फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। तो ऐसा नहीं है हम खुद कर लेंगे, बट इतना है कि ताकि सबको एक साथ काम करने का मौका मिले और ग्रो करने का मौका मिले। सो ऑल्सो इफ यू हैव सम सीनियर्स गाइड्स हु यू थिंक यू वुड वांट टू ब्रिंग टू अस, जो आप चाहोगे कि सबको जिनका एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो उनको भी प्लीज आप रिकमेंड करो। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आई होप आपने ज्वाइन किया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हमारे नंबर्स आपके पास हैं, रीच आउट, इट विल बी वंडरफुल टू कंटिन्यू दिस विथ यू। Right. So with that, we wish you a wonderful evening and all ओके activities. ओके सर, So kind of you, sir. So kind of you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you to everyone. थैंक यू सर। Sir, bye guys. Bye Bye. Gupta ji. Thank you.